आज दुनिया का माहौल देख लीजिए। वॉर सिचुएशंस, वेस्ट एशिया टेंशंस और ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस। अब देश सिर्फ ऑयल या ट्रेड के लिए compete नहीं कर रहे हैं, अब असली फाइट डेटा पर भी हो रही है। आज के टाइम पर डेटा इज न्यू पावर, और जब हर देश अपना डेटा कंट्रोल और सिक्योर करना चाहता है तो एक चीज मैंडेटरी हो जाती है, और वो है डेटा सेंटर। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है या फिर अगले 10 साल सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर में होने वाला है? और आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड है। अब सवाल आता है, व्हाई नाउ? अभी ही क्यों डेटा सेंटर इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं? पहला फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। इंडिया इज ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी एंड इंडिया इज डेफिनेटली बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। ग्लोबल कंपनीज अपना डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया शिफ्ट कर रही हैं। दैट इज अ वेरी विजिबल चेंज एंड यू आर लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन राइट नाउ। दुबई में कितने ही डेटा सेंटर पे अटैक हो रहे हैं, या मिडिल ईस्ट में कोई भी डेटा सेंटर सेफ नहीं है। सो उसका एक बेनिफिट इंडिया को होने ही वाला है। दूसरा, रेगुलेशन, जो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। गवर्नमेंट ने गेम ही चेंज कर दिया है। डीपीडीपी एक्ट, आरबीआई रेगुलेशन, अब डेटा को इंडिया के अंदर स्टोर करना कंपलसरी ही है। ये कोई चॉइस नहीं बची। इंडिया दुनिया का 20% डेटा जनरेट करता है, लेकिन इंडिया स्टोर कितना करता है? सिर्फ 6%। और ये गैप ही नेक्स्ट डेकेड की मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तीसरा, एआई रेवोल्यूशन। अब सिर्फ एआई डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि पूरा डेटा सेंटर का डिजाइन, पावर रिक्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स चेंज हो रहा है। और चौथा है रिन्यूएबल एडवांटेज। इंडिया के पास लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का स्ट्रॉन्ग एज है, जो ग्लोबल डेटा सेंटर रेस में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे डेटा सेंटर होता क्या है, अभी ये थीम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डेटा सेंटर के टाइप्स क्या होते हैं, आईटी स्टैक वर्सेस फैसिलिटी स्टैक, असली वैल्यू कहाँ बनती है। बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर भी डेटा सेंटर थीम में आ चुके हैं, उनके लिए स्कोप कितना बच जाता है इस गेम में। डेटा सेंटर बनाने में लैंड का क्या रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, जहां 45% कॉस्ट पावर में जाती है और 18% कूलिंग में जाती है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि अगले 10 साल का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कहां बनने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमिताभ और मैं सिंपलीफाई करता हूं स्टॉक मार्केट और डिफरेंट सेक्टर्स को आपके लिए, ताकि आप किसी भी बिजनेस आइडिया को डीप में समझ सकें और उससे बेनिफिट कर सकें। सो आज हम डेटा सेंटर को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, बट हमारे पुराने व्यूअर्स को पता है कि हमने आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले हमने डेटा सेंटर पे एक डीप डाइव वीडियो किया था, जिसमें हमने डेटा सेंटर के सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में एक टेक्निकल एंगल से एक्सप्लेन किया था। पिछले 2 साल में जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, तो यू कैन गो बैक and watch that video for details, and here our pace would be slightly faster so that we can maximize the output per minute in this video. इस वीडियो में हम थोड़ा सा फोकस ज्यादा करने वाले हैं 2 सेगमेंट्स पे, जो कि फैसिलिटी स्टैक का पार्ट है। वन इज पावर एंड सेकेंड इज कूलिंग। शायद ये पॉडकास्ट 2 पार्ट में आपके सामने आए, क्योंकि हमने 50 स्लाइड्स का डेक बनाया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। So data center actually होता क्या है? Data center is actually the backbone of the digital economy, which is powering everything from cloud services to artificial intelligence. So why I think data center is a decade-long growth story in India? First, that India is at a position जो एक जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन बन गई है, स्पेशली आफ्टर द वेस्ट एशिया वॉर। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी इन्वेस्टमेंट को फ्लो करने के लिए, वो है सिक्योरिटी। एंड दुबई और मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया में अभी डेटा सेंटर पे जो अटैक हुए, जो अमेजन के डेटा सेंटर थे, उस पे ईरान ने ड्रोन से अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया। उसके कारण एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मिडिल ईस्ट के डेटा सेंटर पे बन जा रहा है, बिकॉज डेटा सेंटर गेम इज अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन। और एज पर गेम थ्योरी वी आर स्टेटेड टू विन, बिकॉज इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मोर सिक्योर्ड एंड लेस कॉस्टली place for data center. We'll talk about the costs somewhere down the line in the video. Second important factor for us to appreciate is that Indian government जो है वो बहुत ही sensitive है about data privacy and data localization.
बिकॉज अल्टीमेटली दोस्तों हमें भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डेटा इज द न्यू ऑयल। फ्यूचर में हम लोग इतना ज़्यादा डेटा क्रिएट कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया पे इतना रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है, उस डेटा को लेकर के फ्यूचर के जो मर्चेंटाइजर हैं, फ्यूचर बिजनेस हैं, वो हमारे डेटा को यूज़ करके एक बहुत ही कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं टू अस, विच विल बी easily adopted or accepted by the customer. This is a plain simple consumer marketing. And इस कंज्यूमर का डेटा अगर देश में ही रहे तो ही देश की सॉवरेनिटी सिक्योर है। अदरवाइज अगर ऐसा हो कि हमारा डेटा अगर दूसरी कंट्रीज में है या हाइपर स्केलर्स ने लोकलाइज नहीं किया है और वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन और सिंगापुर कहीं और जगह पे है, देन वी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट डेटा। And that's why Indian government has taken initiative in 2018 जब RBI जो कि काफ़ी अलर्ट रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने गूगल पे और अमेजोन पे और सारे पेमेंट गेटवेज जो ऑपरेटर थे उन्हें ये गाइड किया कि आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा है वो इंडिया में ही रखना है। सो सिंस 2019 ऑनवर्ड्स एटलीस्ट हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पेटीएम के थ्रू हुए या जीपे के थ्रू हुए वो सिक्योर्ड है। बट इसी चीज़ को आगे करने के लिए एक नया एक्ट आ रहा है जिसे डीपीडीपी एक्ट कहते हैं, डिजिटल प्राइवेसी एंड डिजिटल प्रोटेक्शन। अब डीपीडीपी एक्ट में भी डेटा प्राइवेसी पे बात हो रही है, तो डेटा लोकलाइजेशन इज आल्सो द कोर टू डीपीडीपी एक्ट। तो इन दो रेगुलेशंस के कारण इंडिया में डेटा को स्टोर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडिया में डेटा सेंटर का एक डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी बिल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज रेगुलेशंस। थर्ड एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट रीजन इज AI। एंड AI के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट हैज नॉट डन वेल बिकॉज इंडिया वाज पार्ट ऑफ द anti-AI ट्रेड, एंड दिस इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ इंडिया सिंस लास्ट 7-8 months। बिकॉज एक डीप सीक मोमेंट के बाद चाइना हॉग द लाइमलाइट कि एटलीस्ट एक ओपन AI को compete करता हुआ एक चाइनीज काउंटर पार्ट आ रहा है, बट इंडिया कुड नॉट give any proper innovative answer to the AI question which was put against India कि इंडिया क्या कर रहा है। अभी चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, वहाँ पे भी इंडियन मिनिस्टर को डिफेंड करना पड़ा। सो AI को हम लोग ऐसा लग रहा है कि मिस करने वाले हैं। बट एज ए इन्वेस्टर आप बताइए AI कैसे रन कर सकती है? AI विदाउट डेटा सेंटर रन ही नहीं कर सकती बिकॉज AI इज अ डेटा गजलिंग मशीन। सो AI driven demand is going to be a growth driver for data center boom in India. Fourth important thing is the sun. Renewable energy की जो abundance इंडिया में है that is giving us an edge in global market because डेटा सेंटर का बूम तब हो रहा है जब ESG norms has taken its stature in global politics. So everybody has claimed to satisfy the ESG norms and data centers are no exceptions. अब सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स की बात करें जो मैं एक ABB, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, टैरिल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, वोल्टैम्प एंड सीमेंस के नाम आते हैं। फिर हम डेटा सेंटर के अंदर जाते हैं जो मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज स्विच गियर्स एंड पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं। सो हाइपर स्केलर्स विच आर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, they have committed that they will be using 100% renewable energy globally in their data center, and India has abundance of sun, solar and renewable energy, and हमारी policy भी है, हमारे prime minister is also energy literate prime minister, and that's why data center is going to do well in India. So data center actually अगर हम bifurcate करें तो 5 major pillars पे operate करता है। First is power. It has to have continuous power. 24/7, 365 days continuous power with backup. It has to be UPS backed. Second postulate आता है कूलिंग का, बिकॉज ये जो चिप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, बिकॉज कंप्यूट जितना बढ़ता जा रहा है उतना ज़्यादा वो चिप्स हॉट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स कंट्रोल कूलिंग। ऑल्सो एडजस्टमेंट विद द ह्यूमिडिटी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So that's why a concept of precision cooling systems comes into the play. Third level is obviously naturally that there has to be a physical security. Fourth leg is network connectivity because data has no meaning without connectivity. So it has to be connected with high speed fiber connections, and redundant paths should ensure reliable data transmission and minimum latency. Because latency अगर आ जाती है in network, then the data becomes less valuable. If सही टाइम पे डेटा पैकेट आप तक डिलीवर नहीं हो रहा है, then many benefits which you are supposed to accrue, you will not be able to benefit from it. So data center has to be
superbly connected through network, solid network. And fifth is environmental monitoring, because this is a whole plant in a way, and किसी भी प्लांट को ऑपरेट करने के लिए उसे मॉनिटर करना होता है कि सारे कल पुर्जे सही टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट मेनी सेंसर्स which would be reporting, which would give you a real time assessment of temperature, humidity, power usage, and security events also across all the infrastructure. So data center is a very high class infrastructure play. So पहले हम global data center capacity के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना डिमांड हो रहा है वर्ल्ड में. वर्ल्ड ओवर 103 गीगावाट इज द अप्रोक्सीमेट करंट कैपेसिटी, एंड फ्यूचर में हम 2030 का अगर व्यू लें तो अराउंड दिस इज गोइंग टू डबल इन नेक्स्ट 4-5 years. 200 gigawatt is the projected capacity. Out of 125 data centers are roughly catering to AI-led data center demand, and 75% are non-AI. But this mix is going to be 50-50 by 2030. So AI data center are going to be the fastest growing segment of data center. AI के आने से AI डेटा सेंटर का डिमांड बढ़ा है, और AI डेटा सेंटर और हाइपरस्केलर डेटा सेंटर में एक बेसिक डिफरेंस है कि AI के लिए जो चिप चाहिए होते हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं. That's why better cooling solutions would be needed. This is going to be a 35,000 crore opportunity in next 4 to 5 years. Overall, this will require around 3 trillion of investment. It is almost equal to India's GDP, because you have to purchase real estate, you have to purchase IT equipment, and you have to create a superb infrastructure so that seamless data flow can happen. So global data center capacity is going to expand, and this is going to create huge tailwind for company operating into data center domain. Let's have a look at Indian data center space. Current capacity is 1.5 gigawatt to 1.7 gigawatt, which is going to reach around 4500 megawatt, 4.5 gigawatt by 2030. So almost 2.5 times ka growth in next 4-5 years is expected. This will involve roughly 20 to 25 billion dollar of expected investment. That translates into around 1.7 to 2.1 lakh crore of new investment into data center. So there are 4 types of data center. First is enterprise or captive data center. So these are built by one company for exclusive use. For example, Microsoft is building a Mumbai facility for Microsoft services only, because they have so many software to run in India, and they have to do lot many development work in India. That's why they need a separate captive data center. And the characteristic is that these are custom designed for specific workloads. It has full operational control, and higher capex is involved into this. It is optimized for a specific need. These are customized data centers, and most of the users are large enterprise like Microsoft and likes of Adobe of the world. And also banks, insurance, and government agencies are a user of this type of data center. Second type is more popular one, that is hyperscaler data center. Though Dubai में जो attack हुआ data center पे, that belonged to a hyperscaler, and that was Amazon. There are other cloud giants like AWS, Google, Azure, Meta, Alibaba. Typical size of this type of data center is 10 to 100 plus megawatt per facility. It is a kind of standardized product, and the design is repeatable, and it's target to have a PUE, the power usage effectiveness, which is an index near 1.2, which is a very high standard from India's standard point of view. And it serves billions simultaneously. There are users like Google, Azure services, and many people are renting these kind of data centers. Third type is co-location data center, colo. सो कोलो का मॉडल है कि इसमें थर्ड पार्टी लीज करते हैं स्पेसेस को टू मल्टीपल कस्टमर. सो इट इज जस्ट लाइक मंडी, यहाँ पे डिफरेंट वेंडर्स आर सप्लाइंग टू डिफरेंट कस्टमर्स. So a retail co-location customer rents racks or small cages, and provider manages the building or power, cooling and security related issues. तो इसमें एक रोल जो होता है वो प्रोवाइडर का होता है, बाकी उसमें रेंट पे होते हैं जो लेसी होते हैं. दूसरा टाइप जो होता है उसमें होलसेल कोलोकेशन होता है, उसमें कस्टमर लार्ज होते हैं, 4-5 बड़े लोगों ने मिलके पूरा इंटायर स्वीट ले लिया, और उसमें रैक बेसिस पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े एरिया को हम रेंट आउट कर रहे हैं टू बिग प्लेयर्स. Many financial firms follow this kind of colo model.
फोर्थ इज एज डेटा सेंटर। अब एज डेटा सेंटर मतलब क्या हुआ कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट को मुंबई में एक बड़ा सा डेटा सेंटर है, एंटरप्राइज कैप्टिव डेटा सेंटर है, बट अगर उसे सपोज टाटा स्टील के लिए जमशेदपुर में एक डेटा सेंटर चाहिए, एक सुपर कनेक्टिविटी चाहिए, तो दे कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट लॉन्ग cable between Jamshedpur and Mumbai. So they have to have a local data center which would be very small in terms of 100 kilowatt, or it could be 200, 500 also. But their location is important. It can be planted near shopping malls, city centers, metro towers, and it has a low latency as a feature. So the latency यानी कि डिले नहीं होता है पैकेट्स को रिसीव करने में, so nearby user can best use of it. So many telecom providers have this edge model. Also real-time gaming platforms uses this kind of edge data center, and one of the recent player like Railtel is also setting up many edge data center across the country, and they have around 100 plus of edge data center planned across India. Someday you can see that every major railway junction might be having a edge data center. So that's the future I'm talking about. Data center को two stack में divide कर सकते हैं. One is the IT stack, which includes servers which possess the computer processing power. It has to have the storage array, the database and backup, and also network equipment like switches, routers, firewalls. These are part of IT stack. And the non-IT part is facility stack. Facility stack is what makes or break a data center. If any component of this stack fails, then the entire operations fails. So it's very critical. And it includes power distribution, cooling systems, airflow management for cooling, physical infrastructure, security system monitoring and control, and support systems. Let's understand data center market ecosystem. So who are main players into this game? हाय दोस्तों, आपके लिए एक अपडेट है, एक बिग न्यूज़ है आपके लिए। जो मल्टीबैगर फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं, जो हम लोगों ने डेवलप किया है ओवर लास्ट 10 years ऑफ माई इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर टीचिंग मोर देन 200 मेंटीज ओवर लास्ट 5 बैचेस ऑफ साधन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो हमने एक कंडेंस करके एक रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को अवेलेबल कराया है साधन मेंटरशिप रिकॉर्डेड बैच में. यू कैन चेक आउट फॉर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो बेसिकली प्रोग्राम का फीचर्स मैं क्विकली आपको बता दूं, ये 100+ आवर्स ऑफ डीप कंटेंट है. बेसिकली इट विल मेक एन इंटरमीडिएट learner to advanced investor. So if somebody really wants to master the art of picking multi-bagger at early stage, this is a must-have course, and especially it's self-paced. अपने टाइम के साथ आप उसे सीख सकते हैं, and you will get access for 2 years, and there's a limited time offer of 10% discount. Inaugural discount is there. You can avail that. So you can check the link in description, and it's a good opportunity. Who has been waiting for live classes. For the first time, I'm making these recording available for you at a lower cost, because the main live course है वो 45,000 a year है, and this you are getting at a very good discount of more than 50-60% of discount is there. What you can do is you can create a trial login, and through few lectures which is made available for you to have a taste of the investing mentorship, to create your trial login. Start today. Thank you. There are some entities called hyperscaler, as I said, Google Cloud, Microsoft Azure, Nvidia. These are named as hyperscaler. So Google ने directly India में invest किया है. साथ ही साथ they are working with Adani Enterprise through a JV which is called Adani Connex, जिसमें they are developing India's fastest AI data center campus. They have centered themselves around Visakhapatnam, Vizag in Andhra Pradesh. Google का AI hub जो Vizag में है, it involves roughly 15 billion USD investment over 5 years, which includes gigawatt scale data center operations, which will support a robust subsea cable network and clean energy to drive the most demanding AI workload in India. So Google is making India AI ready through the Vizag data center. Let's come to Microsoft Azure. जिनका core business जो है Azure का, वो है cloud platform which has 29% of market share. Azure AI with OpenAI integration is also going to happen. Copilot is there, which Microsoft has launched. So there are many enterprise-focused product suite which Microsoft is trying to implement for its user in India. That's why they're required to do $3 billion investment plan through 2025 to 26. And Hyderabad data center is one of the largest in the region, which is developed by them. It's set to go live by June 2026. They will also add hubs into Mumbai, Pune, and Chennai, as well as they have identified 2 Geo Azure regions in Maharashtra and Gujarat. Third player, which is very serious player, is Nvidia.
इसका कोर बिजनेस जो है AI GPU चिप्स का है, जो कि अगेन AI के लिए फोकस्ड है, एंड इट पावर्स 90% ऑफ द AI ट्रेनिंग inference in data centers. So it supplies GPUs to India's hyperscalers like AWS, Azure, and Google. They are also powering the AI infra demand via partners like Adani, Google, India Data Center. Reliance is also partnering with NVIDIA to construct a massive AI-ready data center in Jamnagar. And this project is going to be a 3 gigawatt facility. So this itself is going to be a 3 gigawatt facility. And that will take all the estimation for a toss, because we are thinking of 4.5 gigawatt in next 3-4 years, and Reliance itself is trying to do 3 gigawatt, but right now they are doing 1 gigawatt within 24 months of this announcement. So एक साल almost हो चुका है. Maybe end of the next year, FY28 में we'll see some NVIDIA and Geo based data center which would be gigawatt scale. अब data centers must have uninterrupted power, and India में uninterrupted power के लिए you need to have a generator setup. Cummins और Jackson, जो कि डीजल जनरेटर सेट बनाने में मार्केट लीडर है, किर्लोस्कर, they are going to benefit from data center demands. UPS is a technical product जिसे बनाते हैं Eaton's, Schneider Electric and ABB and Delta जैसी कंपनी. Vertiv is also an important name here, which is into UPS. Then there is a requirement of bus bars or busway trunking system, BTS जिसे बोलते हैं. उसमें Eaton, Schneider Electric, Legrand, ABB, Vertiv and Siemens जैसे large players ही operate करते हैं. इसमें से 4 बड़े नाम आ रहे हैं. ABB, it provides data center electrification solutions to power 24/7 operations. Fourth company is Schneider Electric. It is very much focused on data center, and this is featuring data center as a sunrise segment. उसमें एक Sterlite Technology is a leading player. It's a global leader into digital connectivity infrastructure servicing. It's a kind of a play on data center because co-location वाले मॉडल पे आते हैं, तो उसमें 3-4 प्लेयर हैं. जैसे उसमें मेजर प्लेयर इज कंट्रोल एस, जिसका कोर बिजनेस है वो hyperscale co-location operator है, which they are a full stack DC services company for enterprises and government. They have done a partnership with NTPC Green Energy for renewable energy, and they officially launched a 4,000 crore hyperscale data center in Chennai called Namma Data Center. That is a cutting edge facility which spans over 1 million square feet with a 72 megawatt IT load, making it one of the world's tallest data center with 2 interconnected buildings. So 2 building के बीच में को connect कर रहे हैं through that itself is a data center. It's a part of company's $2 billion investment plan announced in 2023, and almost half they have spent, with 650 megawatt data center capacity projected by 2030. So they are trying to get a big chunk of India's data center market. Second one is Yota. Yota is a wholly owned subsidiary of Hiranandani Group, which is a real estate player based out of Western India. उनका कोर बिजनेस जो है वो hyperscale co-location with GPU cloud, and they have a AI focused edge or hyperscale business. They are developing plans to build 7 hyperscale data center in cities like Chennai, Kolkata, Pune, Thane, Mumbai, Gift City, and Dhaka in Bangladesh. Apart from this, they are trying to build around 56 edge data center by 2027. E2E network, which is a business which we have discussed 2 years back. Their core business is AI ML based GPU cloud service providing to multiple units like public, private, or sovereigns also. So इनका data center plan is involving heavy capex on GPU expansion. They are developing a sovereign AI platform. Basically, L&T has acquired 18% stake in this company. So after L&T acquisition, they are trying to launch a 1-year GPU service from January 2026 via L&T network. And they are aiming to expand its presence in the AI-focused data center. Co-location data center में there are other players like Nextra, which is a subsidiary of Airtel, not fully owned subsidiary, just 12% stake owned by Airtel. They target to have 1 gigawatt capacity in 3 to 4 years. This company currently holds 12% market share with around 120-130 megawatt capacity of the whole Indian market. Now they are targeting to have 25% market share. So they want to have 1 gigawatt capacity in 3 to 4 years. Focus is on AI or cloud demand. Green power and land availability is already there. So they want to grow B2B via low latency fiber and subsea cables and DC to DC connectivity. Adani Connex emphasizes on hyperscalers with renewable energy, targeted 1 gigawatt tied up capacity by 2030, 100% renewable energy powered. Actually, this is a JV between Adani Enterprise 50% and there is a global data center provider called Edge Connex. They have a 50 megawatt operating capacity. The pipeline is to do 136 megawatt
and total 166 megawatt. So they have a total commitment of 210 megawatt. They are developing hyperscale data center infrastructure in Chennai as part of its pan-India expansion strategy. Because Chennai is emerging as the global data center hub due to its strong connectivity through multiple undersea cables, which is cable landing stations, enabling low latency international data flow. And that's why one of the players which we have detailed in our channel Sadhan, that was Techno Electric, वो लोग भी चेन्नई में around 28 megawatt का data center launch कर रहे हैं. So many people are focusing around Chennai for this reason, because Chennai benefits from favorable regulatory environment as well, and proactive state policies are supporting digital infrastructure growth in Chennai, and that's why Adani Connex and Techno Electric are फोकसिंग ऑन चेन्नई. तो सबसे पहले हम इसको बाइफर्केट करेंगे. पहले हम लोग इस बिजनेस में जो ईपीसी इंटीग्रेटर है उस पर फोकस करते हैं, जो कि लेआउट डिजाइन सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग. तो इसको करने के लिए एलएनटी जैसे ईपीसी प्लेयर की जरूरत होती है बहुत बार, और they are doing a serious business in data center. They are the largest EPC contractor. They have rebranded their data center business as Larsen Toubro Vyoma, which is targeting hyperscale facility in Mumbai, Chennai, and Bangalore for high performance computing, HPC, and advanced storage. Because L&T have recently pivoted to technology centric businesses like semiconductor and data center and all. Currently, they are operating 32 megawatt capacity. 14 megawatt is live. 18 megawatt is commissioning by end of FY26, which just happened. Total capex is of around 1,000 crore. They have done partnership with Indian-owned data centers for sovereign AI. फॉर एग्जाम्पल E2E नेटवर्क का जो GPU क्लस्टर है इन L&T चेन्नई DC, वहाँ पे उसको होस्ट कर रहे हैं. सो L&T इज ट्राइंग टू डू अ सीरियस बिजनेस आउट ऑफ दिस गेम. Second player is Techno Electric, which is again a layout design service and EPC integrator. As we understand that when we'll go deep, we know that data center involves huge power requirement, and power is around 45% of the capital cost. So Techno Electric has an edge because they have done whole life the power procurement. So EPC में जो procurement part है, that's very central to their business model, and data center is again a procurement game. If you happen to do this very meaningfully and very efficiently, then you can create an edge in this game, because ultimately supplier तो वही लोग हैं, स्नाइडर, ABB और हिताची, और उन लोगों से ही आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड समवन सिमिलर लाइक ईटॉन और डेल्टा जिससे ये ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो वहाँ उनको एक एज मिल जाता है. एंड दैट्स व्हाई टेक्नो इलेक्ट्रिक हैज़ पिवटेड, एंड दे आर देयर फ्लैगशिप प्लेस इज चेन्नई, जहाँ पे 36 मेगावाट का वो करने वाले हैं. 6 megawatt phase 1 is operational since September 25, and 36 megawatt commissioning is planned over 2.5 years and 3 years. Second place is around 16 megawatt at Noida, which is built under partnership with Railtel, which is central around edge data center, and out of which around first 0.5 megawatt will be operational by March 2026. कोलकाता में भी 16 मेगावाट का वो सिलिकॉन वैली डेटा DC बनाने वाले हैं across 4 acre plot. Total DC capex target is 5,000 crore by 2030, with around 500 to 600 crore planned for FY27. Noida, Calcutta, and 3-4 edge data center they are trying to build. एज डेटा सेंटर में रेलटेल से उनकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, जो उनको 102 एज DCs अक्रॉस 23 स्टेट्स अंडर अ 20-year रेवेन्यू शेयरिंग कंसेशन वो रेलटेल के साथ कर रहे हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट and transfer model. So first of its kind, BOT into data center. Under this they have made a Gurgaon data center live. मुंबई में भी उन्होंने लाइव कर दिया है, और FY26 क्लोज तक वहाँ पे ऑक्यूपेंसी भी आ जानी चाहिए. सो दिस इज द टेक्नो इलेक्ट्रिक डेटा सेंटर स्टोरी. इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंपनी इन डिटेल, देन यू कैन फाइंड अ लिंक हियर. वी हैव डन अ half an hour deep dive on this company, because this is also benefiting from smart meter and the transmission EPC boom. So don't miss out watching that video after this. Layout design mein there are other players like Orient Technology. These are listed companies. Penar is also listed. So Orient का business model है कि ये they are basically IT infrastructure and services player. सो वो हार्डवेयर रीसेलिंग के बिजनेस में भी है, क्लाउड और मैनेज सर्विसेज भी वो करते हैं. सो दे प्रोवाइड डेटा सेंटर स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स फॉर एंटरप्राइजेस एंड यूटिलिटी क्लाइंट्स. Currently,
their revenue from data center business plus managed services is 350 crore, which is around 30% of their top line, which is around 900 crore. So more than 30% का business ये data center aligned sector से कर रहे हैं. That's why Orient Technology become interesting company to watch. Second is Pennar Industry. They do a couple of more businesses, not just data center. They are majorly into PEB business, and PEB would be required for data centers, especially in countries like USA, जहाँ पे कि manual labor is very costly. They are getting around 35% of their PEB order book is from US, basically catering to warehousing and data center. So we cannot say कि 35% data center से आ रहा है. It's warehouse plus data center. Around 50% revenue जो है वो diversified revenue engineering से आती है, और 50% custom design building solution, which is PEB. So out of 150 is PEB, and PEB में around 35% is from US, which could be data center plus warehouse. It can pivot to that side because US में data center demand is at a different scale. So Pennar could be a beneficiary of US data center demand. Other players are Sterling and Wilson and Tata Projects, which are equipped to do this kind of business. So let's understand डेटा सेंटर बनाने में लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होती है. एक थंब रूल है कि 1 acre per megawatt is needed for a single story facility. But for multi-story, this requirement reduces to 0.5 acre per megawatt. But we have seen instances like Techno Electric का, इनका जो चेन्नई का कैंपस है, वो सिर्फ 4 एकड़ का है, और वहाँ पे उन्होंने 16 मेगावाट ऑपरेशनल करने का प्लान किया हुआ है. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, सो अराउंड 0.25 पर एकड़ पर मेगावाट. तो यहीं पे इफिशियंसी वो ला रहे हैं अपने डिजाइन के थ्रू. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि कंपनीज हु आर इफिशिएंट कैन डू मच बेटर जॉब हियर. टिपिकली एक 100 मेगावाट फैसिलिटी है दैट रिक्वायर्स 10 acres ऑफ लैंड टू अकोमोडेट द मेन बिल्डिंग, बैकअप पावर इक्विपमेंट, कूलिंग टावर्स, वाटर स्टोरेज, बिकॉज कूल करने के लिए वाटर भी चाहिए होगा, फायर सेफ्टी क्लियरेंस जोन होना चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, एंड रूम फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन. इंडिया में लैंड कहाँ से लिया जा सकता है, तो 2 ऑप्शन है इंडिया में. एक तो इंडिया में जो डीसी डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक मुंबई, बैंगलोर एंड पुणे एंड ऑल दोस प्लेसेस में हुआ है, जहाँ पे देयर आर रियल एस्टेट डेवलपर्स who are private players who own the land beforehand, like Lodha, they have land in Palava. वहाँ पे उन्होंने STT ग्लोबल डेटा सेंटर को एक हाई रेट पे लैंड सेल किया है. 500 करोड़ में उन्होंने कुछ 24 एकड़ सेल किया है. उसके कारण उस एरिया का लैंड रेट बढ़ गया है. तो पलावा में डीसी बनाने से उनकी लैंड रेट भी बढ़ जा रही है. सो मेनी रियल एस्टेट प्लेयर आर इंटरेस्टेड इन दिस गेम, एंड हीरानंदानी थ्रू योटा इज ऑलरेडी डूइंग दिस फॉर 5-6 years. सो और योटा के बारे में हमने ऑलरेडी बात की. देयर आर अदर प्लेयर्स लाइक तुषार इंफ्रा और पैंथियन बिल्डकॉन. उन्होंने भी अंधेरी में कुछ 2.5 एकड़ का प्लॉट जो है वो एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर को बेचा है फॉर 855 crore rupees. यू कैन इमेजिन द price appreciation through data centers. Brigade Group is also trying to do something into Bangalore. DLF is also a huge land bank, and they are under discussions with other players. The other body is government industrial bodies, which is located across different states like MIDC in Maharashtra, TIDCO in Tamil Nadu, EPIC in Andhra Pradesh, and YIDA is in UP, and TIDCO is there in Chennai. So there are multiple government affiliated entities which are providing the land so that anybody who wants to set up data center there can come with investment. So these are grabbing the piece of the India's data center growth story. So as an investor हमें cost को समझना बहुत important है, because ultimately we are trying to take the best companies who are under the value chain of data centers. तो उसको drive करने के लिए India has to be super competitive. India is already the second cheapest data center player globally. पर मेगावाट हम कॉस्ट देखें तो अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो इंडिया का एवरेज है $6.64 million per megawatt, which is second cheapest, second to Vietnam, which is around 6 megawatt, and the costliest is Japan with around $15 million per megawatt, and Silicon Valley US is 13 million per megawatt. New Jersey is also 13. So you can see the whole pecking order, and India is very competitive. So data center build cost per megawatt is important benchmark, and there we are very competitive. Let's try to understand data center capex का breakdown. Most important piece of the puzzle is electrical system, which occupies 45% of capex. उसमें आ जाते हैं electrical subsystems like UPS, generators, switchgears and PDU, and we'll talk about each units और उसके जो major manufacturers हैं who are going to benefit out of this DC boom. उस पर हम लोग डिटेल करने वाले हैं.
and likewise for all other segments, sub-segments also. Second one is mechanical cooling, which involves chillers and liquid cooling equipments makers. वो 18% of capex लेता है. Third one is civil and building and cold shell और warm shell स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो रियल स्टेट का प्ले है, लैंड बेसी में आ जाता है, दैट इन्वॉल्व्स अराउंड 17% ऑफ द कॉस्ट. 12% गोज टू आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व्स रैक्स एंड नेटवर्किंग केबल्स, and there is a software requirement like data center information management software, that is also IP led businesses. तो वहाँ पे भी 12% का खर्चा होता है. 5% goes to other segments like which goes into security, access control and fit outs like furnitures and all, and 3% goes to fire detection and suppression segment. So let's look at key infrastructure components first. So सबसे important होता है access flooring, जो ground flooring होती है. These are called raised floor for airs and cables to pass through, because air circulation के लिए you cannot have the simple tiles जो हमारे घर में होता है. वहाँ पे उसकी जगह रेस्ड फ्लोर्स चाहिए होते हैं, और उसमें एक कंपनी है दिस इज वेरी पॉपुलर विच इज मार्केट लीडर कॉल्ड यूनिटाइल. दे आर द लीडिंग रेस्ड एक्सेस फ्लोरिंग मैन्युफैक्चरर सिंस 1999 and they are specialized into data center and server room solutions. Steel panels भी ये सप्लाई करते हैं with high load capacity. The other one is next level access floor, which is Mumbai's largest, and they have certified with PSA and CISCA standards. There are other places like server rooms flooring, Pallium, Dawn and Kingspan. Let's talk about fire resistance. Fire resistance क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आपके doors होते हैं, partitioning होती है, paints होते हैं, these should be fire resistant. So that gives opportunities for companies like Greenlam, which manufactures fire rated doors and laminates. They have NCF certified doors that can be adaptable for DCs. So they are also silent beneficiary of this revolution. Other companies like Century Ply, which manufactures firewall plywood or partitioning. Firewall plywood की property होती है कि this partitioning should have a 50-minute fire spread resistance. 50 मिनट तक fire से fight कर सके, ऐसे laminates होने चाहिए in order to serve to DCs. थर्ड कंपनी विच इज़ अ वेरी पॉपुलर वन, एशियन पेंट्स. तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि एशियन पेंट्स ऑल्सो हैज अ जेवी विथ अ कंपनी कॉल पीपीजी इंडस्ट्री विच इज़ अ मार्केट लीडर इन इंडस्ट्रियल पेंट्स. और एशियन पेंट्स पीपीजी प्राइवेट लिमिटेड is a joint venture and which is specialized into industrial coating. So they provide a high performance solution for asset protection. Other players like PPG paints, Axo Nobel, which is good into industrial paints, and Durlac paints also have fire protection coatings. Now let's focus on the electrical side of the thing, which is around 45% of the total cost. इस data center power distribution का structure हम देखें तो उसमें सबसे पहले आता है एक power supply आती है जो बाहर से आती है, which could be supplied by a GIS, because these data centers are located in cities largely. तो वहाँ पे स्पेस रिक्वायरमेंट जो है सबस्टेशन की कम होनी चाहिए, इसलिए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होना चाहिए. तो जीआईएस प्लेयर्स जो है जिसमें कि स्नाइडर एंड एबीबीज आर मार्केट लीडर्स, वैसी कंपनियां जो है वो जीआईएस सप्लाई करती हैं, बट दैट इज आउटसाइड डेटा सेंटर, जस्ट आउटसाइड. देयर आर यूपीएस विच इज अंडर द कैंपस. अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम होना चाहिए जिसमें बहुत सारे स्विच गियर्स और बैटरीज होती हैं. स्विच गियर्स में अगेन बहुत सारे प्लेयर आते हैं जिसके नाम हम लेंगे. ऑल्सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज PDU, इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, विच रिड्यूसेस द वोल्टेज फ्रॉम 480 watt 3-phase to 208 watt 3-phase, that distributed to RPP, which is one leg of distribution, and then it steps down further to one single or three-phase wattage of 120 watt to server racks. So server racks contain smaller PDUs feeding servers. एक बड़ा PDU होता है और server racks के अंदर छोटे PDUs होते हैं which are distributing the power to the chips. अब सबसे पहले ट्रांसफार्मर्स की बात करें, जो मैंने GIS और उनकी बात की थी. They steps down grid power from 100 और 33 और 11 kV to usable facility voltage. तो इसमें जो स्विच गियर ट्रांसफार्मर मेकर्स हैं लाइक ABB, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, टैरल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, वोल्टैम्प एंड सीमेंस के नाम आते हैं. फिर हम डेटा सेंटर के अंदर जाते हैं, जो मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज स्विच गियर्स एंड पैनल्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ABB, सीमेंस, हिताची, ईटॉन, इनके नाम आते हैं. तो ये बेसिकली दे प्रोटेक्ट एंड रूट्स पावर फ्रॉम ट्रांसफार्मर टू डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट. तो एक तो उन्होंने ट्रांसफार्मर बनाने में ABB सीमेंस का आया, फिर स्नाइडर एंड ABB आर अगेन देयर एज अ MV LV स्विच गियर्स. तो ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर्स, दीज आर टू डिफरेंट यूनिट जहाँ पे ऑलमोस्ट बड़े प्लेयर्स ही ऑपरेट कर रहे हैं, ABB, स्नाइडर एंड हिताची एंड सीमेंस लाइक्स ऑफ दैट, बिकॉज वो बहुत हाई वोल्टेज पे पावर आता है और उसको
control karna, to step down karna to low voltage is very critical, and that's why all the MNCs are there in the market for that, which supply reduced voltage to downstream equipment. Data centers must have uninterrupted power, and India में uninterrupted power के लिए you need to have a generator setup, DG set as a backup, and उसके कारण जितने ज़्यादा data centers होंगे उनको कभी कभी दो बैकअप की जरूरत होती है. सो क्यूमेंस और जैक्सन जो कि डीजल जनरेटर सेट बनाने में मार्केट लीडर है, किर्लोस्कर, they are going to benefit from data center demand. Siemens also makes that, and Caterpillar is also a dominant player into DG sets. After DG sets, there is the requirement of UPS systems. UPS is a technical product जिसे बनाते हैं Eaton's, Schneider Electric and ABB and Delta जैसी company. Vertiv is also an important name here, which is into UPS. So basically UPS का काम होता है to provide zero transfer time bridge between grid failure and generator kicking. Worst case में अगर grid failure होता है तो फिर generator kick होने में time लगता है, उस gap को fill करने के लिए हमें ये सेटअप करना पड़ता है यूपीएसएस का. तो यूपीएस बैटरी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. यूपीएस उसके बिना तो हो नहीं सकता. तो एक्साइड एंड हमारा राजा आर टू एक्टिव प्लेयर इनटू दिस गेम व्हिच ऑपरेट्स थ्रू वीआरएलए बैटरीज. देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बस बार्स और बस वे ट्रंकिंग सिस्टम, बीटीएस जिसे बोलते हैं. उसमें ईटॉन, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, लीग्रैंड, एबीबी, वर्टिव एंड सीमेंस जैसे लार्ज प्लेयर्स ही ऑपरेट करते हैं. फिर बिजनेस आता है पैनल्स का, स्विच गियर्स का, जो कि सर्वर्स के पास चाहिए या आपको फैसिलिटी के अंदर में चाहिए होती है. वहां पे एबीबी और सीमेंस इज मार्केट लीडर. सो डेटा सेंटर डिमांड इज ड्राइविंग द इलेक्ट्रिकल पावर प्लेयर्स, एंड उसमें से 4 बड़े नाम आ रहे हैं. एबीबी इट प्रोवाइड्स डेटा सेंटर इलेक्ट्रिफिकेशन सॉल्यूशंस टू पावर 24/7 ऑपरेशंस विद यूपीएस, स्विच गियर्स, RPP and prefabricated modular solutions for data centers. So data center centric है ABB का product basket. Second नाम आता है Siemens का. Siemens position itself as one of the key beneficiary, and they are saying that it's one of the 3 key verticals for them. They are supplying medium volt switch gears, smart grids, automations and distribution boards, and also software for energy optimization of other subsystems like chiller systems and other command control platforms for multi-site monitoring. So Siemens का प्रोडक्ट जो है वो डिजिटल ट्विन्स और इंडस्ट्री 4.0 के जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे डेटा सेंटर में यूज हो रहे हैं. थर्ड कंपनी इज हिताची विद कमिशनिंग ऑफ 220 किलोवोल्ट GIS सबस्टेशन फॉर अ पुणे DC. They have a strong segment order growth, and their product include transformer, GIS, AIS, switch gears, reactors, substation automation softwares like SCADA and SAS, and modular solution like compact 400 kilovolt mobile substation for power quality. So they are a company with different kind of products which is catering to the needs of data center. Fourth company is Schneider Electric. It is very much focused on data center, and this is featuring data center as a sunrise segment. They are providing end-to-end solutions including power transformer, digitized AIS panels and subscription maintenance. Also they provide breaker transformer for solar power also. अब बैटरी पैक में 2 कंपनियां जो इंटरेस्टिंग है वो है एक्साइड, विच इज मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई पावर लेड एसिड यूपीएस बैटरी, फॉर एग्जांपल VRLA, वर्ला एंड फ्रंट एक्सेस डिजाइन for industrial UPS applications including data centers. उन्होंने EHP एक्स्ट्रा हाई पावर सीरीज लॉन्च की है वर्ला की, जो कि इंडस्ट्रियल UPS है, which is optimized for DC reliability. The businesses are going strong because of these demand, and they are targeting Q3 में they themselves had generated around 100 crore of revenue from data center alone. Amara Raja is also developing HUPS, high performance UPS, and under VRLA segments, and they have ramped up in-house tubular sales. Let's look at networking, which is the next leg. तो नेटवर्किंग में क्या क्या आते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर चाहिए होता है, केबलिंग चाहिए होती है, जो ऑप्टिकल डेटा केबल्स जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट गियर्स वुड बी रिक्वायर्ड. सो उसमें एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग प्लेयर. It's a global leader into digital connectivity infrastructure servicing telecom operators and data center also. So it's a kind of a play on data center because they are expanding their data center portfolio. They have launched AI hyperscale ready connectivity product, and they are saying that data centers are going to be the fastest growing driver of fiber demand. Sterlite also highlighted a full stack DC connectivity suite which includes optical fiber cables, specialty cables. So they are developing some hollow core fiber as next generation product suited for AI led low latency environment. YTD 26 में
the company has data center order of worth 500 crore out of total 4,200 crore order book, which is sizable. And this order book is growing 40% YOY. One can see the growth of order book of data center under STL, and the mix of data center enterprise product is rising. Networking में दूसरा player है HFCL, Himachal Futuristic Communication Limited. It's a diverse telecom infrastructure player. Their main product is optical fiber and optic fiber cable, OFC जिसे बोलते हैं. So HFCL has strong data center exposure primarily through optical fiber cable OFCs for hyperscales or AIDCs, and expanding into passive connectivity solutions. So they have signed around $1 billion DC order for next 5 years under data center, and their existing capacity is fully utilized. They did around 550 odd crore of fundraise to expand fiber plus ecosystem capacity. HFCL is gearing for growth through data center in this segment. Networking में other players are like Tejas Networks and Finolex Cables. So Tejas Networks is a Indian telecom player which is manufacturing wireline and wireless networking product with R&D focus, and they used generally by telecom service provider and defense, but they have scaled up their product portfolio, especially enterprise switching portfolio, for suiting the data center needs. So they are gearing up for that. Finolex cable जो है वो manufacture कर रहा है OFC for telecom and data centers. Power cable भी बनाते हैं for DC power needs. So they have two products catering to data center, OFC as well as power cables. They are also expanding backward into glass preforms. They are expanding to support high density DC cables. So they are backward integrating into this value chain. KI cable also manufacture wires and cables like extra high voltage cables, HT cables, LT cables, which would be required for supplying the power to data centers. There are other players like Nextra, ADC Communications, Tata Communications, Arista, Juniper, Simon, Comscope, Panduit and Corning. एंड इन सब के बारे में हम लोगों ने जब अपना पिछला वीडियो शूट किया था तो काफ़ी डिटेल में बताया है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर डिटेल ऑन दीज कंपनीज विच आर कैटरिंग टू नेटवर्क. दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने डेटा सेंटर वैल्यू चेन के 2/3 पड़ाव को पार कर लिया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में बात कर ली, नेटवर्किंग के बारे में बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सब एक्सेसरीज लगते हैं, फायर एंड ऑल, उसके बारे में बात कर ली. बट लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि जब मैं ये दूसरी बार जब डेटा सेंटर पे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट तो अभी मैंने बात ही नहीं की. पिछले बार जब हमने डेटा सेंटर कवर किया था तो उसमें एक्साइटिंग पार्ट जो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही थी वो थी डेटा सेंटर के पावर रिलेटेड स्टॉक्स, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही सही टाइम पे इन्वेस्ट भी किया और दैट हैज वर्कड आउट फॉर ऑल ऑफ अस. बट इस बार मुझे पावर से भी ज़्यादा एक्साइटिंग जो सेगमेंट लग रहा है विच इज़ गोइंग टू बी यूज इन टू डेटा सेंटर इन अ ह्यूज क्वान्टिटी, एंड दैट इज कूलिंग. बिकॉज ओवर द 2 years एक नया डेवलपमेंट हुआ है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. और एआई के आने से एआई डेटा सेंटर का डिमांड बढ़ा है. और एआई डेटा सेंटर और हाइपरस्केलर डेटा सेंटर में एक बेसिक डिफरेंस है कि एआई के लिए जो चिप चाहिए होते हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं. That's why better cooling solutions would be needed. This is going to be a 35,000 crore opportunity in next 4 to 5 years. सिर्फ और सिर्फ कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस 35,000 करोड़ में कौन कौन सी कंपनियां बेनिफिट हो सकती हैं, देन यू कैन टाइप P2 for the next part. If we get enough comment, then we'll definitely cover that segment for you, because I personally feel that is the most exciting part of data center as we speak. So if you want us to cover that segment for you, don't forget to type P2. Do let us know in the comment कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, because हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है. ओवर 2 week का एक एफर्ट लगा है and more than 50 slides we are presenting here. So let us know how our efforts are changing your life, changing your perspective and changing your investment game. Because Sadhan ka ultimate game is to help you become a better player in your investment game. So stay connected with us. Thanks for watching this video. See you in the next video. Thank you.